Good evening and welcome, ladies and gentlemen. Arvind Kejriwal's attempts to distance himself as far as possible from Liquorgate, build a distance, stay away, not be associated, if required, blame it on Sisodia. All of that has failed. The Delhi High Court has directly linked him to the liquor scam conspiracy, saying he was part of the conspiracy. The Delhi High Court has upheld his arrest. And the Delhi High Court has said that Arvind Kejriwal was directly involved in the formulation of the liquor scam policy. And now if Arvind Kejriwal was involved in the formulation of the liquor scam policy, as the court is alleging, then he can no longer distance himself from the liquor scam. Therefore, till this afternoon, before what the court said, Arvind Kejriwal was presenting himself as a victim. Arvind Kejriwal and the AAP was presenting Kejriwal as someone who almost didn't know, was unaware of the whole scam, that there was a scam happening. He had no idea about it, that people were making money, crores were being made, siphoned. He had no idea. Arvind Kejriwal was innocent of all the information. But now that the court is echoing what the ED has alleged, who will believe Kejriwal or the Aam Aadmi Party? Maybe not even their own supporters. So far, the allegations were of the ED. The allegations were of the government. But now the observations are of the Delhi High Court. Kejriwal's strategy has been to take an image of victimhood among the people. Now the same people will ask him why the court does not believe him. Why the court does not believe he's innocent. Why the court says that his arrest is completely legal. So what is the long and short of it, viewers? The long and short of it is that Kejriwal does not have either a legal or a moral defense tonight. And the worst thing that could have happened to Kejriwal is to have been linked by the court to the liquor scam conspiracy. Now let me ask you all tonight, all of you, and I know many of you, maybe even Kejriwal supporters. Let me ask all of you, including Kejriwal supporters, after what the courts have said today, after what the Delhi High Court has observed today, would even you, after what the courts have said, give Kejriwal the benefit of doubt? Yes, some of you will say, Arnab, he's not been convicted yet. Yes, I agree. But after what the court has said, he does not have the moral edge anymore. Debate 1 tonight. The Delhi High Court flatly dismissing Arvind Kejriwal's case today. Upholding his arrest. Accepting the allegations that he could have collected kickbacks as AAP chief. Is this becoming Kejriwal's liquor scam? Debate 2 tonight. Prime Minister's very aggressive campaign in Tamil Nadu. Is the BJP on the edge of making a serious dent, changing the mood in Tamil Nadu? The shifting political sands in Tamil Nadu. Debate 2 tonight. Debate 3 this evening. America says we don't want to get into the kind of rubbish that is being published by The Guardian about India killing Pakistani terrorists. Indo-Pak debate on that is at 10:30, a day after Jaishankar's comment dismissing The Guardian piece. And here are the headlines this Tuesday evening, the 9th of April, on the Debate Tonight. Delhi High Court dismisses Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest. Observes Arvind Kejriwal is involved in the formulation of the terrible liquor policy. Amidst the focus of Arvind Kejriwal in the terrible and corrupt liquor policy, AAP says this is a witch hunt, but is completely on the back foot after the court's observations. Prime Minister leads extremely aggressive campaign as the BJP tries to make inroads in Tamil Nadu.
Prime Minister on a roadshow in Chennai. A day after S. Jaishankar shreds the Pak killings theory and the exclusive interview to Republic, the United States says they're not getting in the middle of it. कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? Defense Minister sharp retort to China renaming several places in Arunachal Pradesh says, what if India made similar changes to names of places in China? Ladies and gentlemen, singularly, this is the biggest ever setback for the Aam Aadmi Party and the biggest possible setback for Arvind Kejriwal in the Delhi High Court. Arvind Kejriwal had challenged his arrest and the Delhi High Court has said that no, his arrest was completely legal and that he was allegedly involved in the formulation of the terrible, dreaded and corrupt liquor policy called the Liquor Gate or liquor scam. This, ladies and gentlemen, without doubt, is the big, not just the biggest legal blow, but it takes away any shred of a moral defense that Arvind Kejriwal had so far. Let's debate. किस प्रकार की गणतंत्र की हत्या हो जा रही है इसके अंदर 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है, इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। Kejriwal's charges on the Enforcement Directorate in the Delhi Liquor Gate case have fallen flat. In a scathing observation, the Delhi High Court said Kejriwal's arrest is legal while rejecting Delhi Chief Minister's plea against ED arrest. The court established Kejriwal's link to liquor scam, pulling him up for formulating the liquor policy. कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। With Kejriwal likely to knock at Supreme Court door, challenging the High Court order, the Aam Aadmi Party continues to cry vendetta politics. कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। BJP has hit back at Aam Aadmi Party, saying Kejriwal has been exposed in the court. जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। सवेरे से ये प्रचार था कि जमानत की याचिका लगाई है, कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जमानत की तो याचिका ही नहीं थी, वो तो हिरासत पे ही सवाल उठाने की याचिका थी। यानी अहंकार इतना बड़ा था और तथ्यों के धरातल पर वो चकनाचूर हो गया। Is it Kejriwal's liquor scam with Kejriwal in jail? Is AAP staring at an existential crisis? Let's debate. See Reena Gupta there and just getting seated out there. We'll show him on the screen is Sudhanshu Trivedi. So it's AAP versus BJP. But Akashdeep and Subrashta are starting the debate. Akashdeep, after today, I think nobody will believe the AAP because the court has made some very strong observations here right now, giving no defense to Kejriwal. Till now, it was all that the charges were from the ED, but now these are the observations of the court. So, will you start attacking the court? Akashdeep.
Yeah, Arnabji, as this is the matter regarding the court, I hope that I'll be getting the time. I just want to remind you about the date of 7th February 2024, when in the excise policy related matter, Delhi High Court denied bail to Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh in money laundering case. The same evidences were put in this particular matter in the High Court, and the same evidences were put in this particular matter in the Honorable Supreme Court, where the Honorable Supreme Court, Justice Khanna, said that nothing has been recovered. It means that there is no proceeds of crime, and there is no trace. It means that there is no money trail. This is all, I'm not paraphrasing. I'm just quoting the Honorable Court, Justice Khanna quoted, nothing has been recovered, and there is no trace. So, and that is why this particular matter, in this particular matter of Arvind Kejriwal ji, when this matter will go to Honorable Supreme Court, this matter also will see the same light, it seems, that the matter saw in the case of Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh, who got later on bail from Honorable Akashdeep, Supreme I'm Court. getting Subrashta to respond and opening it up after that. Thank you. I'm keeping it brief at the start. I want to point out, viewers, please keep in mind what the Honorable High Court has said today. The Honorable High Court has said that Arvind Kejriwal is allegedly involved in his personal capacity in the formulation of the liquor policy and demanding kickbacks. And secondly, in the capacity of national convener of Aam Aadmi Party. Till now, Subrashta Arvind Kejriwal's argument was, मुझे क्या पता है जी, मुझे जो पता ही नहीं है, ये सब किसी और ने किया है, मैं तो सिग्नेचर भी नहीं करता हूँ, मैं तो था ही नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ. This is the first time that his direct name is coming with the support of the court, observations of the court. Subrashta, your response to the initial observations of Akashdeep, then we'll open this up. Arnab, I would just want to read something else that the court said. The court said the petitioner has been arrested in money laundering case and the court has to examine his arrest and remand as per law irrespective of timing of elections. The court also observes that who gives tickets for contesting election or who purchases electoral bonds is not the concern of the court. I think these are all arguments which will be made by the Aam Aadmi Party spokesperson sitting right here. So it is important for me to set the context right there that the timing of the election has nothing to do with it. And if Arvind Kejriwal or Aam Aadmi Party was so concerned about the timing of the elections, they shouldn't have waited for so many summons. The first time the summon came, he should have rushed to prove his honesty and his alternative politics and his vision to the people of this country, saying that, well, elections are around the corner and I don't want to make this a political issue. So let me just go and settle the scores right there. Now, on what Akashdeep is saying, let it be very clear, Akashdeep, that the Honorable High Court also observes that material collected by ED reveals that Kejriwal conspired and was involved in the formulation of excise policy and used proceeds of crime. So you might not be able to trace the money trail and it might not be in the public domain because Arvind Kejriwal has still not resigned from his constitutional position of being a chief minister of Delhi, and therefore he can compromise with the findings later on, and he can compromise certain offices as he holds a constitutional post, and not everything has to be in the public domain right now. So I don't understand why is the Aam Aadmi spokesperson so gleeful. The fact that the Honorable High Court is reprimanding Kejriwal, the fact that it is laying bare the quote-unquote alternative policies of Kejriwal, the alternative politics of Kejriwal, I don't know what is so gleeful about this. Because as a voter of Delhi, I feel ashamed that I have a chief minister. I have a chief minister who formulated a liquor policy to receive kickbacks from certain individuals. And I have this chief minister who is so shameless that he does not have the moral gumption to resign, prove his innocence, and then come out in the court of people to say, elect me if you want. Factually incorrect statement made. One minute. Now Reena and Sudhanshu are on the debate. Thank you. Only two, please, on the screen. Thank you. And now, viewers, I want to tell you
I want to tell you, please understand. Sudhanshu ji and Reena ji, 9:17 PM. मेरे हाथों में जो ऑर्डर है उसकी ऑफिशियल कॉपी करीब 100 पेज जस्ट आई है. मैं प्रिंट आउट मेरे पास स्टूडियो में आ रही है. मैं अब उसको पढ़ के सुनाऊंगा. और उसका कारण यह है कि जब भी बातें की जाती है तो आम आदमी पार्टी कहती है अरे आप तो ये ईडी की बात कर रहे हो. ईडी की कोई वैलिडिटी नहीं है, सीबीआई की कोई वैलिडिटी नहीं है, सरकार की कोई वैलिडिटी नहीं है, हम किसी को भी नहीं मानते. वी डोंट बिलीव एनीवन, वी ओनली बिलीव द कोर्ट. जब कोर्ट कहेगी तब हम मानेंगे. ये कहा गया था पिछले हफ्ते तक. द पॉइंट बीइंग मेड, Sudhanshu Trivedi and Reena, is that when the court says something about us, we will take it seriously. Till then, we will not take it seriously. I said, okay. Now you said, Reena, the arrest is illegal. कहा था कि नहीं कहा था? रीना जी कहा था कि नहीं कहा था अरेस्ट इज इलीगल? अभी आज कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट इज कंप्लीटली लीगल. अरेस्ट इज नेसेसरी. नो, यू सेड अरेस्ट इज इलीगल एंड आपने कहा कोर्ट ने नहीं कहा है अरेस्ट इज इलीगल. कोर्ट हैज सेड अरेस्ट इज टोटली लीगल. पॉइंट 1. तो आप पहले तो ये बोलिए कि कोर्ट ने जो कहा है उसको मानते हैं कि नहीं. आज के बाद कभी भी बाहर जाके नहीं बोलेंगे अरेस्ट इज इलीगल, because Delhi High Court has said arrest is necessary and arrest is legal. Just respond to this one point. To this one point, very specifically respond. Reena Gupta, arrest is legal, says the Delhi High Court. Do you agree or not? Arnab, I have utmost regard for the courts. The Honorable Supreme Court also said, show us the money trail. There is no money trail. Your case will fall flat in 2 minutes. ये सारे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही रिमार्क्स हैं. आज क्या बात क्लियर हो गई? 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई. पहली बात कि शरद रेड्डी, जिसको ये किंग पिन बोलते हैं, आज ऑन रिकॉर्ड कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 59 करोड़ की रिश्वत ली है. उसके बाद शरद रेड्डी को बेल दी है. दूसरी बात, मगुंडा रेड्डी जो इनका दूसरा सरकारी गवाह था, आप कोर्ट के नाम पे झूठ ना बोले. आप कोर्ट के नाम पे झूठ ना बोले. की तरफ से टिकट आप झूठ बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए. नो, यू आर लाइंग. तीसरी बात यू आर लाइंग. अर्नब, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट अर्नब. तीसरी बात, there are several witnesses including Chandan Reddy, Sameer Mahendru, Dinesh Arora, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमारे को पीटा गया, हमारे को मारा गया, उसके बाद हमने अपनी गवाही चेंज करी. ये चंदन रेड्डी का एफिडेविट है, ये मेरा बयान नहीं है. चंदन रेड्डी ने एफिडेविट दिया है कि मुझे इतना मारा गया, मेरे दोनों कानों के पर्दे फट गए. अगर इतना किसी को पीटा जाएगा, उसके बाद तो जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो बोलने को तैयार हो जाएंगे. This is exactly what has happened in this case. It is a full political conspiracy hatched by the Bharatiya Janata Party being executed through the ED. Reena, today nobody will believe you. Today, I'll tell you. Now I'll get Sudhanshu to respond. First point is, मेरा सवाल क्या था, viewers? What was my question? My question was, the Delhi High Court has said that the arrest was legal, the arrest was necessary, the arrest was as per due procedure. Aam Aadmi Party says the arrest was illegal. They told me earlier, if the court says the arrest was legal, तब मानेंगे. अगर ED बोलेगी arrest was legal, नहीं मानेंगे. और आज कोर्ट ने कहा है the arrest was legal and necessary on the basis of the evidence that we have with us. And yet tonight you watch on the program this evening and evening after evening after evening, the Aam Aadmi Party comes and says arrest was illegal. Arey bhai, how? The court is saying the arrest was legal. You won't believe the courts now. Can I respond in 5 seconds? Sudhanshu Trivedi is on the debate. My question went unanswered. Sudhanshu Trivedi responding to Reena tonight. No, Sudhanshu Trivedi responding to Reena tonight. The same High Court made all of these remarks. Sudhanshu Trivedi responding to you tonight. What happened? Supreme Court Big debate, 9:20, 2 p.m. viewers. बदल दिया, बदला कि नहीं बदला सुप्रीम कोर्ट ने? The one thing. Weak ground. Arnav,
The picture is very clear today. The cunning strategy of Aam Aadmi Party to play the legal procedure for the purpose of. अरे भाई अपने अपने टर्न पे फलाना हो गया, क्या हुआ? संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी. Now can I speak, ma'am? सुधांशु जी इस बात का जवाब दें कि now the picture is very clear. The cunning strategy of Aam Aadmi Party to use the legal procedure for the purpose of their political gimmick and political theatrics has fallen flat, and court has taken a serious aspersion on that. And one more thing I would like to say, Mr. Kejriwal is one of the most highly educated politicians of the country, has shown that how highly immoral a person can be. This is the party who uses to say that the moment allegation is there, the person has to resign, but he didn't resign despite such a strong snub by the court. And now, my more serious question is that, अरे भाई इस देश में एक लॉबी हुआ करती थी जो बहुत तेजी से एक्टिव होती थी किसी के एलिगेशन लगने पे, इमीडिएट इस्तीफा दे, अदरवाइज देयर विल बी अ मिसयूज ऑफ पावर, और यहां तक कहती थी कि द मैटर शुड बी शिफ्टेड टू अदर स्टेट्स हाई कोर्ट. आज कहां है वो लोग? After such a strong comment of High Court, nobody is asking that there can be a strong possibility of misuse of power if the person remains, and particularly as head of the government on which the allegation is there, and everybody is keeping mum. So the people of India should understand the conspiracy, that from where this NGO lobby operates and for which interest these NGO lobby operate. And one more thing I would like to say. Oh viewers, I have big news. बहुत पढ़े लिखे और इस बात I have some really big news. One sentence. Arnab. Okay. अरे सुधांशु आप भाई, बहुत बड़ी खबर आई है हाथ में. दीजिए कि आपने सुधांशु द्विवेदी, आपको रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं. Viewers, I have to share something. I have to share something. देखिए इसको करीब से. Viewers, watch this carefully. रीना जी ज्यादा बोल के फायदा नहीं होगा. मेरे हाथ में दस्तावेज आ चुके हैं. And please viewers, I want to tell you this is big breaking news. पैसा आया भाई. अरे आप बताइए ना, आपने शरद रेड्डी से चंदा क्यों लिया? आपने किंग पिन से चंदा क्यों लिया? इस बात का जवाब दीजिए आप. अरे भाई आज तो सब कोर्ट ने कह दिया. क्यों दे दी? किसको टिकट मिला, किसने बॉन्ड दिया, उसका कोर्ट के प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं है. 60 करोड़. And you have used the word. सब मेरे हाथ में है, सब मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है. रीना जी, everything is in my hands tonight. Please, सुधांशु द्विवेदी, don't make viewers wait. Viewers को रोकिए मत. रीना जी, 1 minute, hold on. Viewers को मत रोकिए. ये जो दस्तावेज मेरे हाथ में है ये बहुत जरूरी है. इसमें कुछ ऐसे चीजें कही गई है कोर्ट में. एंड व्यूअर्स, दिस कोर्ट ऑर्डर इज विद नोबडी. किसी के पास ये कोर्ट ऑर्डर नहीं है. एज यूजुअल कोई चैनल नहीं है, कोई साइट नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एज यूजुअल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास 100 पेज की ऑर्डर हाथ में आ चुके हैं. इसका पॉइंट नंबर 108 पढ़ने वाला हूं. पॉइंट नंबर 108 बहुत एक्सप्लोसिव है. सुधांशु त्रिवेदी, रीना जी, प्लीज let me read 108. 108 viewers. Viewers, मैं लेफ्ट राइट कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं जैसे लिखा गया उसको पढ़ रहा हूं. इसको ध्यान से सुना जाए. और व्यूअर्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. रिमेंबर, इसकी बहुत लीगल वैलिडिटी है. As regards the material in possession of the Directorate of Enforcement, on the basis of which there were reasons to believe that the petitioner Arvind Kejriwal was guilty of the offence of money laundering for the purpose of section 19 of the Prevention of Money Laundering Act, the court has already taken note of this material in the detailed discussion above. यानी कि court has already seen the material and उसमें बहुत कुछ find किया है उन्होंने. Now, there are statements of witnesses including approvers of C. Arvind, Shri Bucci Babu, Shri Magunta Reddy, Shri Raghav Magunta, Shri Sharat Reddy and Shri Vijay Nair.
The statement of Shri Vijay Nair has also been recorded under Section 50 of PMLA and Section 164 of CRPC. Viewers, this is so big. Arvind Kejriwal's closest man, Vijay Nair, has exposed him and given statements against him. And till last week, आपको याद होगा सुधांशु त्रिवेदी ये कहते थे विजय नायर कहाँ अप्रूवर है, कहाँ बोल रहा है, सब कुछ बोल दिया. अभी मैं और आगे बोल रहा हूँ. और आगे बोल रहा हूं. सुधांशु जी इसको सुनिए. Understand why court has taken such a strong exception. No, as well as other materials such as the entry register of the office of the petitioner, which reflect that the petitioner allegedly was personally involved in the formulation of the Delhi Excise Policy 2021-22, and that Arvind Kejriwal was prima facie in process of demanding kickbacks from the South Group in exchange for favors. Prima facie, Arvind Kejriwal involved in kickbacks from the South Group. Similarly, material has also been collected by the Directorate of Enforcement in the form of statements of Hawala operators. One candidate of Aam Aadmi Party, survey workers, area managers, assembly managers, who were all working with the Aam Aadmi Party during the Goa election, along with WhatsApp chats between several persons, and other material collected through the raids of income tax, which reveal that the kickbacks which were received from the South Group were utilized by the Aam Aadmi Party for funding Goa elections, whose 2022, whose national convener is the present petitioner Arvind Kejriwal. This is very big. This is evidence, and viewers, इसमें what comes out is the court has applied its mind on the evidence. अभी तक ये बोलते थे आम आदमी पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे खिलाफ एक भी पेज नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिली है. अभी सारी एविडेंस जो मिली है उस पर कोर्ट ने अपनी माइंड अप्लाई करने के बाद ये डिसीजन दिया. No, this is huge. This is huge. अभी इसके बाद अब ये भी नहीं बोल सकते कि एविडेंस नहीं. सुधांशु त्रिवेदी पहले फिर रीना, सुधांशु वर्सेस रीना. This debate is becoming very big. Ladies and gentlemen, Sudhanshu Trivedi first. Sudhanshu Trivedi first. After that, Reena. Said that they are having no, first Sudhanshu, then you. First Sudhanshu, then you. As provided by the ED. After Sudhanshu, I'll come to you, Reena. And from the statement of Aam Aadmi Party's Goa candidate that he has received cash and with a subsequent money trail which is being connected to WhatsApp chats and other things. And now if the Vijay Nair is saying, I have not seen the judgment as you have said, but what you are quoting that if Vijay Nair has also given a statement, तो जानते क्या हो रहा है अर्णव, ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको किसी और से डर नहीं है, अपनों से डर है, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को डिच किया है पार्टी बनने से लेकर किरण बेदी से लेकर प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, एडमिरल रामदास, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, इतना कि अब इनको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि अगर मैंने कुर्सी छोड़ी तो क्या होगा, कहीं मेरे साथ भी वही ना हो जाए. और जब इनके क्लोज एसोसिएट्स भी ये करते जा रहे हैं तो मामले में जितनी कानूनी पेचीदगियां हैं उससे ज्यादा सियासी पेचीदगियां हैं और उससे ज्यादा डर अपनों से है. ये कह रहे हैं कि इनको सरकार से डर है, सरकार से नहीं, अपने कर्मों से डर है. इस समय अपनों से डर है, जिनको इस बात का डर है कि मेरी सरकार का क्या होगा, इसलिए कुर्सी से चिपके रहना इनकी मजबूरी है. एक और मुझे बहुत सेंसेशनल बात है. रीना गुप्ता, my next question is to you. Please listen very carefully, Reena Gupta, because no, my question to you. No, you have to listen to this question. It's a very important question, a very big question, a massive question, a very factual question, an important question, an incriminating question, a necessary question, an obvious question, a straight question. Reena Gupta, here is my question. Till now you have said, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज यही कहते हैं कि पे अभी तक हमारे खिलाफ कोई नई एविडेंस नहीं आई है. Now let me tell you, viewers, para number 110 says, having gone through the records of the case, including the case file handed over by the investigating officer, यानी पूरी केस फाइल और एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट को दी है और उसको स्टडी करने के बाद द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन the argument of the petitioner Arvind Kejriwal is misconceived, as the Directorate of Investigation of Enforcement after October 2023 has carried out further investigation and has recorded statements of several persons, including the statements of Shri N.D. Gupta recorded on 16/11/2023, as well as the statement of one candidate of the Aam Aadmi Party. Now, one more point, listen here.
The court has said there are other statements also as pursued by the court in the case file, including one statement recorded on 20th of March 2024, which contain material prima facie incriminating qua the petitioner. This is huge. The Delhi High Court has said, जो evidence है ये बहुत incriminating है vis-a-vis Kejriwal. These are extremely strong observations, Reena Gupta. The court has examined the evidence and is finding the evidence very strong against you, prima facie. Allow me to speak now, आप समझ रहे हैं ये कितना serious हो Allow रहा me है? to speak. This is the observation of the court. Of course you मैं speak. समझ रही हूँ, मैं खुद But these वकील are the हूँ। observations मैं of the समझ सकती हूँ, court. बोलने तो दो मुझे। हाँ, बोलने तो तो आप दो बिल्कुल मुझे। समझेंगी, बिल्कुल समझेंगी। जी, आप बोलिए। पहली बात तो ये अर्नब कि सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं उन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, फिर भी उनको पता है कि जजमेंट में क्या लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जजमेंट पढ़ने से पहले पता है कि जजमेंट में क्या लिखा है? पहली बात। अरे भाई सुनाई नहीं दूसरी पड़ता बात, आपको? मैंने दूसरी क्या बात बोलने की सुनिए। कोशिश कर रहे हैं? What you are quoting from the judgment? इतना भी नहीं सुनाई पड़ता, इसी चक्कर में आप लोगों की गति होती है ये सही नहीं है कि सुनना ही नहीं चाहते, सुधांशु सिर्फ जी, आप बोलना चाहते हैं। बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आप शांत होकर मेरी बात सुनिए। आप अरे भाई आप शांत होकर मेरी सरासर बात झूठ सुनिए बोल आप। रही है। मैंने कहा दूसरी बात, what you have ये quoted from the सारे हाई judgment और आप कोर्ट ऐसे ने कह रही हैं जैसे मुझे सारी जजमेंट पहले से सेम पता बातें कही संजय सिंह है। के इतना तो केस झूठ में। मत बोलिए। और अब बोलिए। उस दिन भी गला फाड़ फाड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे ये सारी बातें। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सब शांत हो गए, सबकी बोलती बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल देके। सेम विल हैपन इन दिस केस आल्सो। वी विल टेक दिस टू सुप्रीम कोर्ट एंड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन दिस केस विल lie flat. That is point number 2. Point number 3. Point number 3. 1 minute Arnab. Point number 3. Do you realize what I asked you? I told you, Reena, no, you can't give your own statements. You cannot avoid my question like this. No, Reena, 1 minute. Reena, आज मुझे रोकना पड़ रहा है. आपकी tendency है. You are not being able to answer my question. अगर if you are not able to answer my question, तो बोल दीजिए. अर्नब, आपके question बहुत difficult है. आपका material बहुत strong है. I cannot answer your question. मुझे avoid करने की जरूरत है. मैं कुछ और बात बोलूंगी, आप कुछ और कहेंगे. If you are not able to answer my question, you can say, Arnab, I cannot handle your question. बोल ही नहीं रही हूं. I cannot answer your question. तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि कोर्ट has said that it has examined the evidence and found prima facie guilt. That it has examined the evidence against Arvind Kejriwal and found prima facie guilt. What does that mean? What does that mean? Arnab, the same court said all of these things in case of Sanjay Singh. In another case. फिर क्या हुआ? I am talking about the case on Kejriwal. Supreme Court I am not talking about the Sanjay Singh case. Same court Wholly said different. all of the same I thing. am talking about the Kejriwal case. Sorry. No. Justice Khanna ने What are you दिखाया. saying? Show I am us the talking about the proceeds of Kejriwal crime. case. Show us the money trail. तो कुछ नहीं दिखा पाई. You can't. Oh God. ED was not able to show the money trail. ED was not able to show any proceeds of the crime. I'll tell you one thing. Same way. No. लोअर कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट ओवरटर्न करती है, हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न करता है. इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं. और आप तो कोर्ट को बिलीव नहीं करती हैं. दैट इज व्हाट द सुप्रीम आप तो कोर्ट सिस्टम को बिलीव नहीं करती हैं. ओके, अब मैं सबसे एक्सप्लोसिव बोल देता हूं. नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है. मैं बहुत एक्सप्लोसिव पॉइंट है. एक मिनट सुधांशु जी, बहुत एक्सप्लोसिव पॉइंट है. नहीं सुधांशु जी, ये सुनिए. उसके बाद ये बहुत एक्सप्लोसिव पॉइंट है, विस्फोटक पॉइंट है, एक्सप्लोसिव पॉइंट है, कैटेगोरिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेरी बात सुनिए, इस पॉइंट को सुनिए. द कोर्ट हैज सेड, और इसके बाद देखिए रीना जी कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे इस पे. उनको शॉकिंग लगेगा कि आज ये सिचुएशन है, मगर उनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने कहा है. द कोर्ट हैज सेड देयरफॉर प्राइमा फेसी the mandatory provisions of section 19 of PMLA have been satisfied by the Director of Enforcement while arresting the petitioner Shri Arvind Kejriwal in compliance with the judgment of Pankaj Bansal. And अब ये सुनिए सुधांशु जी, इसको सुनिए गौर से. And there is material at this stage which points towards the guilt of the petitioner Arvind Kejriwal for commission of the offence of money laundering.
Para 114 speaks that there is material prima facie accepted by the court which points towards the guilt of Arvind Kejriwal. Observations of the court. Observations of the court. This is very strong. This is very difficult. There can be no comparison drawn to the Sanjay Singh case. It's wholly different. Sudhanshu Trivedi responding to this debate is opening up with Reena. Once again, viewers, the order copy with me tonight. Sudhanshu Trivedi. Just very... one thing I want to say, that if they are so much innocent that has been claimed by Aam Aadmi Party, then there was no need of destroying dozens of SIM cards, dozens of phones, and even the laptop. And there was no need of Sri Kejriwal ji saying that I have forgotten the password. They could have provided all the mobile phones and all the SIM cards. So that itself proves that ki dal mein kitna gehra kala tha. And on the technical point what Reena ji was saying, the case of Sanjay Singh and the case of Kejriwal ji is totally different. Sanjay Singh applied for the bail. None of the phones but have been destroyed. Let me complete the sentence. Let me complete the sentence. Let me complete the sentence. Why should we? अरे क्या बात कर रही है? Dozens of phones were not available, and Kejriwal ji has said that he has forgotten the password. It's very clear. There was no doubt about it. ED has found out 43 SIM cards which were there, and now those SIM cards are missing. अब कोई जरूरत नहीं साहब. देखिए, please don't disturb. अरे आप तो वो लोग हैं भाई, आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं दिल्ली के सीएम से बात कर रहा था, अचानक फोन कट गया, मैंने मिलाया तो पता चला कि उसका रिचार्ज खत्म हो गया था. इस ढंग की अपसेट बात करने वाले कि चीफ मिनिस्टर के पास रिचार्ज किया हुआ फोन होता है क्या? चीफ मिनिस्टर के पास सरकारी फोन होता है जिसका रिचार्ज कभी नहीं खत्म होता, वो पोस्टपेड होता है. इतनी अपसेट इलॉजिकल बात करने वालों से क्या बात की जाए? नाउ आई एम कमिंग टू द टेक्निकल पॉइंट. अब देखिए, डिस्टर्ब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. नाउ देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट विद अदर देन डिस्टर्बिंग. वेरी स्ट्रांग फाइट. अरे भाई झूठ क्या बोल रहे हैं? ये तो ऑन रिकॉर्ड है. झूठ और सच सामने आ चुका. और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ. झूठ बोलना अभी ये बात देखिए, अब डिस्टर्ब लगातार कर रही है. बंगारू लक्ष्मण पार्टी, आप जवाब दीजिए कि कैसे आपने शरद रेड्डी से अरे भाई आप जवाब दीजिए, पासवर्ड क्यों नहीं मिल रहा है? आप जवाब दीजिए, दर्जनों सिम कार्ड क्यों गायब हो गए? आप जवाब दीजिए, दर्जनों फोन क्यों डिस्टॉर्ट कर दिए गए? अब मैं पूछता हूँ दूसरी बात, और सुनिए. अरे भाई आप अगर मगुंटा रेड्डी ये प्रीपेड सिम कार्ड से आपके चीफ मिनिस्टर क्यों बात करते भाई? जब सीएम के पास ऑफिशियल फोन होता है तो प्रीपेड सिम कार्ड से आपके चीफ मिनिस्टर क्यों बात करते हैं? ये भगवंत मान का ऑफिशियल बयान है कि वो बात कर रहे थे केजरीवाल से, उसके बाद फोन कट गया तो पता चला उसका रिचार्ज खत्म हो गया. नाउ यू मेक इट वेरी क्लियर व्हाई ऑन अ प्रीपेड फोन योर चीफ मिनिस्टर वाज टॉकिंग. बताइए, जवाब दीजिए. जवानों चक्की पीसिंग फिर इधर आए वही ज्वाइन करा लिया, चाहे वाटर स्कैम हो, चाहे माइनिंग स्कैम हो, I want to make the debate serious. Kindly, when she is speaking, you lower my feeder. When I am speaking, you lower her feeder. Otherwise, there is no use of doing debate like this. मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार करना. I request tonight. No. 1 minute. Sudhanshu Trivedi and Reena, मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा. आप दोनों प्लीज रुक जाइए. It's a too hot debate. और डिबेट बहुत ज्यादा हॉट है. सारे भ्रष्टाचार. The debate is very hot. जनता पार्टी में. The debate is very hot. मुझे इंटरवीन करना पड़ रहा है. रीना जी please separate. Then I want to speak just one technical point. Arnav, just one sentence. One sentence. No, Keजरीवाल's case is different. 30 सेकंड करो. 30 सेकंड करो. मैं 30 सेकंड करता हूँ. मैं 30 सेकंड. 30 सेकंड. सुधांशु त्रिवेदी tonight. सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड. वॉल्यूम को तो सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड करेंगे या अरेस्ट के खिलाफ अपील करेंगे? काइंडली रीना जी बता दे. आप इस बात का जवाब ये बताइए. अरे भाई वो टेप रिकॉर्डर बहुत हो गया, इस पे टेक्निकल जवाब दीजिए. ये टेप रिकॉर्डर 12 दिन से चल रहा है. कोर्ट ने सारी बातें देख ली. आप ये बताइए, केजरीवाल जी will move to Supreme Court for bail or for against his arrest, because in High Court he was against the arrest, not like Sanjay Singh's application for bail. And second technical point, Sanjay Singh got bail because ED said that they have taken complete evidence and there is no need of further evidence. उसके बाद आप कह रही हैं अरे भाई ED ने कहा कि हमें फर्दर कस्टडी नहीं चाहिए,
तो आपने कैसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट बदल दिया? आपने यहाँ पे सरासर झूठ बोला। सारे के सारे हाई कोर्ट का जजमेंट अगर बदला होता सुप्रीम कोर्ट ने तो था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने जितनी पूछताछ करनी थी कर ली, अब हमें नहीं चाहिए। ये सरासर झूठ बोलने की जो आदत है आम आदमी पार्टी वालों के साथ और नॉन स्टॉप बोलते रहने की जो अगले जन्म में भी आप हमें नहीं तोड़ पाएंगे। आप ट्राई कर लीजिए, आपके पास जो अखंड है आप ट्राई कर लीजिए, आप किसी को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम सारे के सारे कट्टर ईमानदार लोग हैं। ना आज टूटेंगे ना कल टूटेंगे, कोई नहीं टूटेगा। आप क्या सोचते हैं आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ लेंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली पे राज करने का जो आपका सपना है वो अगले 10 साल तक पूरा नहीं होगा। अगले 10 साल तक आप दिल्ली पे किरण बेदी से लेकर प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, कितने टूटे हैं भाई। क्या आशीष केतान से लेकर कितने टूटे हैं। ये टूटने का दर ही कुर्सी छूटने नहीं दे रहा है। ये टूटने का डर ही कुर्सी छूटने नहीं दे रहा है। सिर्फ ईडी सीबीआई का मिसयूज करना आता है आपको। और आपने इस समय देश में आपातकालीन इमरजेंसी घोषित कर रखी है। जिस तरह से इमरजेंसी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी रीना गुप्ता, एक पब्लिक का सवाल है, सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। द नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत। सारी चीजें आपके मान ली रीना जी, सवाल सिर्फ ये है, कोर्ट क्यों कहता है कि अरविंद केजरीवाल इस षड्यंत्र में शामिल थे? Why is the court saying that Arvind Kejriwal is involved in the conspiracy? That is the only question now. सुधांशु त्रिवेदी को इग्नोर कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, चलिए मान लीजिए एक बायस्ड, प्रेजुडिस्ड, वन साइडेड व्यक्ति है, तो पॉलिटिकल पार्टी स्पोक्सपर्सन है, अपनी बातें कहेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे, व्यंग करेंगे, सटायर करेंगे, निकल जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी को इग्नोर कीजिए आप। मगर रीना जी, कोर्ट का जवाब दीजिए। कोर्ट क्यों कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसको आप अवॉइड मत कीजिए रीना जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं, यू कैन हियर मी, ऑडियो लिंक बहुत अच्छा है। Why is the court saying that Arvind Kejriwal is involved in the conspiracy? Why is the court, and second, now that you are listening to me, and the court is saying it has examined the evidence and found prima facie guilt against the petitioner. That is Arvind Kejriwal. It's a court, right? Court is saying. Please, why is the court saying this? क्यों कह रही है court? Specific reply, पहला specific reply, why is the court saying that? डोंट इंटरप्ट मी अर्नव। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ, इंटरप्ट मत करिएगा। द सेम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, एंड अर्नव, आई एम रीडिंग इट आउट, yesterday she stayed the conviction of दिलीप रे। दिलीप रे जिसको 3 साल की सजा हो चुकी थी पोल स्कैम में, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका कन्विक्शन सेम कोर्ट ने स्टे किया। दैट दिलीप रे इज सेट टू कंटेस्ट ऑन अ भारतीय जनता पार्टी टिकट टुमारो। The same court denied bail to Sanjay Singh. The same court has dismissed the plea of Arvind Kejriwal. I cannot say more than that, Arnab. I think you and your viewers are smart enough to put the 2 and 2 together and see it's not equal to 4. It's more than 4. I don't know. So I don't understand. The courts I don't see the logic have said things. So Subrashta is wanting to come back to the debate. 1 minute, Subrashta wants to come back to the debate. I'll let him. 1 minute, Subrashta, go on. Subrashta wants to come back to the debate. Yeah, go on, Subrashta. This is a crazy situation on the debate tonight. So Sudhanshu, 1 minute, Subrashta, 30-second intervention. The debate is very hot tonight. Unmute, yeah. Unmute, Subrashta, unmute. You wanted to respond, I thought there, to what Reena was saying. Can I put a point? Arnab, you know, I've been very patiently listening to Reena ji for a really long time. Subrashta. Let me tell her that her almost an hour-long rant on Republic is not going to answer basic, simple questions that people are asking today. Even the Honorable High Court asked Why today. don't you first introduce who Shubhrashtra is, Arnab? Who is she? Can we get an introduction? Subrashta is a well-known columnist and author with a strong view on public affairs and a free citizen of the country.
She's not involved in the liquor And scam. she's not a पढ़े BJP लिखों की पार्टियों spokesperson. वाले She has never had any role in the liquor scam. And she's अब not a आप दुनिया में BJP रहते took a हैं, public तो position. कौन- Hold on, Is she a hold on, BJP Reena. spokesperson? I am somebody who took a public stand I'm on just- the Okay, I'm she's just responding asking to for that. clarity. Subrata is responding Is she a hard to BJP Reena. spokesperson? So, Reena, I am not here to answer. I am not answerable to your politics here. My question to you is very simple. That liquor scam, where is the white paper? I have been The asking you. nation wants to know whether you are a BJP spokesperson or not. It's a simple question. Answer the question Say that yes the or no. Honorable High Say Court no, you're asked. not a BJP spokesperson. Answer the basic, simple question the Honorable High Court asked. Why was Arvind Kejriwal absconding to 9 summons from the ED? Who are you to Why ask did your questions? leader know? No, Who why are you did to your ask leader allow questions? so-called What's your political locus standi? Do you have some shame left in you? All throughout the show, you disturbed every person in the show, making a general rant Arey, against you should some tell us who people you are first, na? Why do you come as a from the proxy? emergency. Who is you Arvind come as a- Kejriwal? Everybody on, everybody on, everybody on, Arvind everybody Kejriwal on. आज emergency लागू Everybody on the debate. It's a really hot debate Can I tonight. come in? उनके गोद I में want to खिलौने put some facts. बचा रहे हैं वो Please. क्या बात कर रही हैं आप? How dare you invoke the खुल emergency? के बोलो How dare कि you भारतीय invoke जनता the पार्टी के emergency? प्रवक्ता हो। Do you think people of this country are क्यों fools? झूठ Reena. झूठा अपने सामने मुखौटा लगा के बैठते हो? Kejriwal is hand and gloves with the Congress people today. How dare you invoke People the of this emergency? country can see how every corrupt person has joined Bharatiya Janata Party. People of this country will remember all the proxy people who sat Down on has TV already debates gone and down pretended in the to be history neutral and of were India. not neutral. People As of one this of- country will see this also. They will see Both through the corrupt, mukhota. They will see financially through the corrupt, mukhota of all some- these politically neutral For a people right to who are eat always snacks. batting for whoever Reena. is in power. It doesn't matter. not. आज Reena. भारतीय जनता पार्टी पावर में है तो भारतीय जनता Reena. पार्टी का साथ दे रहे Those हैं. political battles also. Arvind Kejriwal is a No, fraud. but this is the words of the court. इसमें power की बात है ही नहीं. जी यार, One minute, जी बताइए. one minute. Just one minute. The court for the court doesn't matter who is in power, who is not in power. Is the Delhi High Court. Let's speak with some respect, Reena. The observations court के हैं. I have a lot of respect. Arnab. आप court के words I को have a lot political of spin क्यों respect. दे रही हैं? However, I respectfully Then why has the disagree court said- with the judgment given by the court? I am not saying I am disrespecting the court. I have a lot of respect for the court. Why has the court dismissed your case? And why has the court said the prima facie there is The court evidence had against dismissed Kejriwal? Sanjay Singh's case also. Arnab, a lower court judgment gets overturned by the higher court. Higher court judgment gets overturned by the Supreme Court. Supreme Court 5-judge judgment gets overturned by a 7-court bench. So it doesn't mean anything. It's just an interpretation of the law. The same way I am saying High court that the judgment very doesn't mean same anything. Court stayed the conviction. High court order does not mean of anything. Dilip Ray. The very same court dismissed the petition. The very same court dismissed the petition of Sanjay Singh. Whereas the Supreme that has Court nothing to do. granted bail to Sanjay Singh. No, one. That's all I'm saying. So I'm only one stating minute. the What does facts in Dilip front of Ray's you, case have to nothing do with else. Kejriwal's case? What does Dilip Ray's case have to do with Kejriwal's case? I still don't understand it at all. आप कोई कोल स्कैम को लिकर स्कैम के साथ लिंक करके क्या कहने की कोशिश करें मैं समझ ही नहीं पा रहा. Let me tell you. Are you trying to put allegations on the court? If you are trying to put allegations of the court, you tell me directly, yes, I'm alleging things against the court. फिर contempt of court हो जाएगी. I am just stating facts. I am not putting any allegation. I am only stating facts that today in the court, the honorable judge said that the chief minister is also like any other ordinary common person. The same judge in the case of Dilip Ray said, क्योंकि वो इतने साल से राजनीति में हैं और चुनाव का माहौल है, इसलिए उनके कन्विक्शन को स्टे किया जा रहा है. तो सेम कोर्ट ने दो बातें बोली हैं. यही कोर्ट ने संजय सिंह के केस में बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी. My God, what are you saying? My God, isn't that your league? No, 1 minute. You are being selective in your quoting of the words of the court. And Sudhanshu Trivedi is on the debate. The debate is hot again. Sudhanshu Trivedi is on the debate. The debate is hot again. Yes, please. रीना जी आप झूठ मत बोलिए. संजय सिंह के केस में ईडी ने कहा वी हैव टेकन एनफ एविडेंस, नाउ वी डू नॉट वांट
फर्दर कस्टडी, फिर आप कैसे करी हाई कोर्ट का जजमेंट बदल दिया? भारतीय जनता अगर ईडी ने मांगा होता और फिर रिजेक्ट हो जाती तब आप कहते, इसलिए झूठ मत बोलिए। ईडी सेड दैट वी हैव टेकन इनफ कस्टडी, नाउ वी डू नॉट नीड। अब बदल गई ना, बदल गई, इसका मतलब ईडी ने नहीं किया। देखिए आप कह रही थी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप कर रही हैं, क्योंकि यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। अच्छा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, कैसे छगन भुजबल के केस में फाइल हो गई, आप बताइए। एक आवाज को तो आप सुनती है, समझती है ना ये, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रफुल्ल पटेल का केस कैसे क्लोज हो गया? प्रफुल्ल पटेल का केस कैसे क्लोज हो गया? हेमंत बिस्वा शर्मा का केस कैसे क्लोज हो गया? क्योंकि इन सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अरविंद केजरीवाल तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। ये आवाज किसकी है? अरविंद केजरीवाल की है, जो कहते थे कोई किसी की जांच नहीं कराएगा, सब मिले हुए जी। क्या बोल रहे हैं? 2 दिन के लिए सोनिया गांधी को अंदर करो और जांच करो, उसके बाद सब पता चल जाएगा किसने किया है। वो शख्स आज ये बोल रहा है। अरे साफ दिख गया, अन्ना के चेले से लालू यादव के चेले हो गए। आपने ये कहा ना कि इन्होंने, आप उनसे पूछ रही हैं ये कौन है रिप्रेजेंटेटिव, अरे आज आप लालू यादव के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। हद हो गई, उनसे आगे चले गए। कम से कम लालू यादव ने इतना तो किया था कि जेल जाने से पहले रिजाइन कर दिया था, आज वो रिजाइन करना भी छोड़ गया। अरे भाई आपने तो क्या क्या बदला है, क्या क्या कहा जाए। I'm closing this very hot debate tonight. I'm closing the very hottest political debate tonight, viewers. My God. ये शायद सुधांशु जी और रीना जी, I don't even want to stop the debate because उन्होंने सही बोला या गलत बोला। अदालत में अभी मैं एक लाइन कहूँ, ये शायद अपनी फजीहत कराने की ये शायद अब तक की बाकी है, इसलिए मुझे लगता है सियासत की फितरत जारी रहेगी। तब उनके ऊपर प्रेशर था कि वो मोदी जी का नाम लें, तो उस समय आप क्या कहते हैं? ये शायद this is the hottest debate on Liquor Gate. Anyway, रीना जी and सुधांशु जी and Akashdeep ji and Subhrashta ji, I think this has been the hottest debate on Liquor Gate. इसका पार्ट 2 करेंगे। This is the hottest debate on Liquor Gate so far. लोग कह रहे हैं अर्नब शो को बंद मत करो। मैं कैसे बंद करूं? That if an ordinary citizen want to ask the question तो सवाल नहीं पूछ सकते। क्या गजब की ऐठन आई है भाई। 10 सेकंड। इसको नहीं ब्रेक लेना पड़ेगा, हमको तो एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है, लिकर गेट तो नहीं होता है ना हमारे लिए, so I have to take an advertising break. Ladies and gentlemen, what a debate tonight. We'll take it forward, and on the other side this evening